even though she's a minister, but the bond stays the same. And with the rest of the gang also, I'm like very regularly in touch with. वो जो relationships थी ना, जो हमारी बनी थी ना उस वक्त, वो lifetime की relationship. Lifetime, yeah. वो वक्त social media का नहीं था. That was not the time of social media. It was a time where I had these group of girls जो address मेरा find out करते थे कहीं से, and इतने बड़े बड़े files and posters and मेरे cuttings and इतनी beautiful gifts बना कर मेरे बिल्डिंग में नीचे मुझे लाकर देते थे. चैनल में लोग लेटर्स लिख के, इतने सुंदर सुंदर लेटर्स लिख के भेजते थे, appreciating your performance, because it was difficult at that time, Yeah. मुझे ना सुधा आंटी ने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है कि ना रोज ना आप ये मत सोचो कि मैंने कल जो सीखा तो मैं थोड़ी और बड़ी हो गई. नहीं, आप रोज एक छोटे से बच्चे की तरह सेट पर आओ, ready to absorb, ready to learn, thinking that you don't know anything. Hi Ritu, welcome to ETimes TV. How are you doing? I'm doing very well. Thank you so much for having me today. वो कितनी प्राउड फीलिंग है कि आपकी स्कूलिंग जो रही एक्टिंग के मामले में वो क्यूंकी के साथ रही, और आपने ऐसे लोगों के साथ काम किया जो आज भी सस्टेन कर पा रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, भले ही वो हितेन हो या फिर आश्लेषा हो. मतलब काफी सारे एक्टर्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. Exactly. अश्लेषा, मैं, हितेन, we were all in that same group जिनकी स्कूलिंग, जैसे मेरी स्कूलिंग, so you talk about me. मेरी स्टार्टिंग हुई थी स्मृति ईरानी, अपरा मेहता, कोमलिका गुआ था, सुधा आंटी के साथ, जो इतने डिसिप्लिन और उस वक्त इतने मजे हुए कैरेक्टर, इतने मजे हुए एक्टर्स थे, एंड उनका काम करने का एथिक वाज सो अमेजिंग दैट. तो मैंने जो सीखा, मतलब मेरे लिए जो रियलिटी थी वो थी, मैंने उनको देख कर सीखा है. तो वो जो वर्क एथिक था, मतलब आज तक मुझे पता है कि जैसे ही मुझे बुलाया जाएगा शॉट के लिए, ऐसा नहीं है कि 10, 12, 15 मिनट या जो भी कर रहे हैं वो उसी वक्त रखा, एंड you're like on the set because you've been called on the set. रीडिंग हो रही हो, 10 बार रीडिंग हो रही हो, 10 बार रीडिंग करेंगे. ऐसा नहीं है नहीं लाइंस याद है, इट्स ओके, या प्रॉम्प्ट करने की जरूरत है किसी को, नथिंग. सो बेसिकली वो जो दैट्स व्हाई इट वाज इजी फॉर मी टू सस्टेन फॉर सो मेनी इयर्स. माय ट्रेनिंग ग्राउंड वाज सो स्ट्रांग, इसीलिए इतने साल सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है. बिकॉज मुझे ना सुधा आंटी ने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है कि ना रोज ना आप ये मत सोचो कि मैंने कल जो सीखा तो मैं थोड़ी और बड़ी हो गई. नहीं, आप रोज एक छोटे से बच्चे की तरह सेट पर आओ, ready to absorb, ready to learn, thinking that you don't know anything. Till today I am on set thinking नहीं यार मुझे नहीं आता, मैं सबसे जितना कम मतलब बोलो, जितना कम समझाओ वो it's okay. You just go as a small baby on the set, ready to learn every single day. That's it. Yeah. And जो वो नया एक क्यूकी के साथ जो पूरा फैन बेस आया था कि केबीसी और क्यूकी एक ही साथ लॉन्च हुए थे और दोनों शोज इतने अच्छे चल रहे थे. टक्कर में इनफैक्ट ऐसा भी टाइम आया जब क्यूकी ने क्रॉस कर लिया केबीसी की टीआरपी को. वो तो टीआरपी गेम हमें अब देखने को ही नहीं मिलेगा. लेकिन उस टाइम जो जिस तरीके की पॉपुलैरिटी आप लोगों ने, जो सक्सेस टेस्ट किया आप लोगों ने, वो किस तरीके का रहा? रितु, इफ यू हैव टू डिफाइन इट. Oh God, it was just magical in one word. It was magical. इतना प्यार, इतना adulation, हम जहाँ जाते थे लोग इतना खुश होते थे हमें देखकर, and एक obviously you feel so important, and एक वो वक्त social media का नहीं था. That was not the time of social media. It was a time where I had these group of girls जो address मेरा find out करते थे कहीं से, and इतने बड़े बड़े files and posters and मेरे cuttings and इतनी beautiful gifts बना कर मेरे बिल्डिंग में नीचे मुझे लाकर देते थे. चैनल में लोग लेटर्स लिख के, इतने सुंदर सुंदर लेटर्स लिख के भेजते थे, appreciating your performance, because it was difficult at that time. Yeah. Like right now, if anybody wants to tell me something, just write me a message on Instagram and it's delivered to me and I've read it and it's sweet. Of course, I appreciate that also. But इस वक्त वो effort लेते थे लोग, and Exactly, and इतना ट्रैवल किया हमने, इतना ब्यूटीफुल था, वो जो मैजिक था वो अब नहीं. राइट. एंड क्या आप अभी भी स्मृति जी के टच में हैं? आर यू स्टिल इन टच? क्योंकि मैंने हमेशा सुना है स्टोरीज दैट क्यूकी गैंग अभी भी टच में है. वो जब भी मुंबई आती हैं, शी मैसेजेस एवरीवन इन एडवांस. शी मैसेजेस इफ शी इज फ्री, यस. या दिल्ली जाना होता है तो वहां जाकर whatever she's doing, she makes herself free and she tries to meet whoever wants to meet her. Like I met her recently when I had gone to Delhi. I
called her, and she was very gracious enough to invite me to her home, and we met there, and so warm, and it's always the madness is just the same, you know, even though she's a minister, but the bond stays the same. And with the rest of the gang also, I'm like very regularly in touch with. वो जो relationships थी ना, जो हमारी बनी थी ना उस वक्त, वो lifetime की relationship. Yeah. And how was your bonding with her when you, because you were very young, even she was young, वो उनके लिए भी एक पहला शो था जो इतना पॉपुलर हो गया. It was very beautiful. उस वक्त ना एक्चुअली इतना काम करते थे ना, हमें रियलाइज ही नहीं होता था कि क्या बॉन्ड है क्या नहीं है. ये सारी चीजें बाद में समझ में आती हैं. उस वक्त हम सिर्फ काम ही करते रहते थे, मस्ती. हमको उन्होंने सबने इतने ब्यूटीफुल अच्छे रूम्स दिए थे. कोई किसी अलग रूम में नहीं बैठता था. हम 10 औरतें सब एक के ऊपर एक उसी एक कमरे में बैठना है. किसी को किसी से अलग नहीं होना है. सब साथ में. किसी से कुछ पंगा हुआ तो सब औरतें ऐसे ही ना, वहां पर ना ऐसे होता था ना, सब औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि सब खड़े हो जाते थे ऐसे, यू नो. इट वाज ब्यूटीफुल. वी हैड अ वेरी नाइस बॉन्ड. इट वाज ब्यूटीफुल. Also, रितु, अगर टॉकिंग अबाउट योर इसके पहले का शो नजर, उसमें भी आपने वेरियस शेड्स देखने के लिए मिले. कभी नेगेटिव हो जाती थी आप, कभी सुपर नेचुरल का भी वो आ जाता था एंगल ये वो. बट आई रिमेम्बर दैट वन सीन जहाँ पे आपको बाथ टब का जो आपका सीन था, वो अपने आप को कन्विंस करना कितना मुश्किल था, क्योंकि एक्टर की लाइफ में कभी ना कभी वो पड़ाव आता है जब उसको ऐसे ऑफर्स आते हैं. काफी लोगों के लिए एक्साइटिंग भी होता है कि आप चलो कुछ अलग करने के लिए मिल रहा है, बिकॉज यू नो यूर ब्रेकिंग योर ओन बैरियर. आपके लिए वो क्या मोमेंट था? It was just exciting. Nobody had to convince me. I was just very excited. I was very nervous. मैं सिर्फ बहुत nervous थी. But you need a certain kind of body language to pull off a scene like that. Yeah. You understand? I have never done it, so I didn't know how to do it. But मुझे ना मेरे मेकर्स पर इतना ट्रस्ट है. Like I said, you know, because नजर के जो मेकर्स थे उन्होंने ही इमली बनाया है. तो इतना ट्रस्ट था मुझे उन पर कि मुझे पता था कि जो भी हो जाए ना, वो मुझे अच्छा ही दिखाए. Means I knew that they would do it beautifully. So वो तो मुझे प्रॉब्लम थी ही नहीं. I didn't need convincing. I was just very nervous. कि will I be able to do it? Will I be able to give it justice or not? You know. So yeah, when they told me Bata, I was like, yeah. लेकिन करूँगी कैसे? And what was your husband's reaction? My husband was like, हाँ, okay. My husband. No, after seeing the video. After seeing the video, he said, "Whoa, looking so hot." I was like, "Yeah, thank you. That's it." Because I told my director, "Saying, bhai, तो जो भी करेगा ना, I should just look very beautiful. That's all. I don't care about anything else." तो उन्होंने इतना beautifully shoot किया था, इतना beautifully shoot किया था, and they made me so comfortable. Yeah, I mean, you know, they made everybody go out and all of that, and so that I wouldn't be conscious now because I was wearing a dress. It's not like, you know, when people don't know, you know, na. So I was very comfortable. They made me very comfortable. The water was warm to the temperature I wanted, and all of that. There was no problem. It was beautiful. It was a damn good experience. Also, a unique part about your journey is your and Ashita's videos. आप लोग इतने hilarious videos बनाते हो. वो एक्चुअली जो फ्रेंडशिप मैडनेस ऑफ स्क्रीन है, क्या वही हमें वीडियोस में देखने के लिए मिलती है? Exactly. And Ashita ना वो इतनी क्रिएटिव है, वो सारे वीडियो सिर्फ उसकी वजह से हैं. I have no input. I just tell her कि भाई तू मुझे बता दे मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगी. She is so creative. She is so good at all of that ना. So all those beautiful videos are all her brainchild, and because our tuning in our relationship is so nice that it comes across like that, you know. You have been part of Ritu a time जहाँ पे क्यूकी जैसे शोज लिखे जाते थे, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया और जो 8-8 साल 10-10 साल चले, एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ ऐसे भी जहाँ पे शेल्फ लाइफ नहीं है. काफी शोज 3 महीने में ही बंद हो जाते हैं, विच इज सैड ऑल्सो, सैड पार्ट. बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो काफी बार टीवी शोज के ऊपर ये भी इल्जाम लगता है कि बहुत रिग्रेसिव कंटेंट बनता है. सिंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ द टाइम्स, व्हाट डू यू हैव टू से? The writing at that time was very beautiful. It was very simple. और competition भी नहीं था. Simple था, competition नहीं था, and layered writing होती थी. हर एक character के लिए लिखा जाता था, जो अब नहीं है. अब one dimensional होता है वो. Maybe it is how it is. It's a medium का, because it has to be fast paced. Because आज के तारीख में क्या है? It is 5 minutes of fame. Everything is 5 minutes. अगर उस 5 minutes में हमने ऑडियंस का अटेंशन नहीं गेन किया तो खत्म. So everything is very fast. It's not layered.
is one dimensional. Yeah. It's just one dimension. But you can't help it. That is how the industry is right now. That is how the medium is right now. So it's that's how it is. It's evolved like that. Also, the best part about you is recently आपने एक statement दिया that you don't shy away from giving auditions also. अगर आपको इस time पर भी इतने सालों बाद भी बोला गया कि you have to audition for a character, you are okay with it, because काफी सारे actors ऐसे भी हैं जो इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं. They don't like कि हमने इतना body of work किया है, आप उसको देख लो. What made you say that? The thing is, I'll tell you what. ईगो पर लेने वाली बात आनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको कोई तंग करने के लिए ऑडिशन पे नहीं बुला रहा है, आपको कोई नीचा दिखाने के लिए ऑडिशन पे नहीं बुला रहा है. ऐसा मेरा अगेन ये मेरा मानना है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. वो बंदा एक कैरेक्टर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. दिमाग में है उसकी वो कैरेक्टर. वो देखना चाहता है कि अगर मैं आपको लूंगा इस कैरेक्टर में या लूंगी इस कैरेक्टर में, तो आप कैसे करोगे, क्या आप वो कर पाओगे जो मेरे दिमाग में है या नहीं. That is why they do a look test. No, yes, that is why there is an audition, because they need to see if the character that they want to cast you in, do you suit that or not. Maybe you are not, maybe you're much better than what that character is, maybe you're not as good. They need to see that, right? True. So according to me, this is what it is. This is world over. You have to audition for whatever, like the biggest of the biggest artists world over in every industry. If you're playing if you're a hero, or if you're like a superstar, if if you're like there, maybe then the game is different. But frankly, for me personally, I don't think it is a matter of ego getting hurt if I'm called for an audition. You do not get advertisements unless you're a brand ambassador for an ad without an audition. You have to audition. That's the reality of the business. Yeah. It's a business. They need to see whether you fit the part or not. It's as simple as that. After doing so many different characters, now what is that excites you? आपको और आगे किस तरीके का काम करना है? What are you looking forward to? Characters, yes. I've always done very urban, simple, strong characters, but urban characters. I've never done somebody जो ऐसे बैठ के पान चबाकर, खड़ी भाषा बोलकर, वो character मैंने कभी किया नहीं है. I want to explore that. I want to do something like that. And I want to do a age appropriate character, somebody who's 44 years old, who's living her life, who finds love at this age. It's a mature love story that I want to do stuff like that. I want to do stories like that. I want to explore stories. I want to explore characters now. Yeah. Recent में आपने किसी का काम देखा है ऋतु जो आपको बहुत पसंद आया? Because अब थोड़ा चीजें पिछले 3-4 साल से बदल रही हैं, where even Shweta Tiwari is the lead of the show, और उनको जैसे आपने बोला mature love story उनको किया उन्होंने. अनुपमा is doing well on the same channel जहाँ पे आप लोगों का शो भी बहुत अच्छा चल रहा था. Do you think कहीं ना कहीं 3-4 साल से चीजें बदल रही हैं और ऐसे mature love stories आ रहे हैं? You talk about actors like मुझे उनका नाम नहीं पता. She's Bengali actress. Somehow I'm forgetting. She was in Sushant Singh Rajput's last film. She played the heroine's mother. Swastika Mukherjee. Hanji. I like her work. Like I love it. Like so the kind of work she's doing, the kind of work Shefali Shah is doing, the kind of roles that they're doing. I want to do work like that. Neena ji, I mean, amazing work. Neena ji, kya kaam kar rahi hain? Wow. So when I see that, I feel that there is hope for me, yaar. I have scope. I still have a long way to go. Right. I feel like that. And what has kept you away from reality shows? It's just not my cup of tea. Not then, not now. I can't do it. Why? Now I'm too black and white as a person. I'm too black and white. I'm too stark. For me, if this is right, it is right. There is no two ways about it. And this is wrong, it's wrong, which doesn't work only in reality shows. You can't do this in a reality show. And I'm not somebody who wants to portray something else. Right. So it's not my cup of tea. Okay. Before signing off, anything you want to say to your fans? I just want to say thank you. Thank you for always accepting me, for loving me, for supporting me always, for encouraging me, for
criticizing me also, so that I do better, and I also get introspective on what I'm doing, and for always welcoming me with your open arms, for blessing me, and I'm just grateful. And I promise you that all your love and your trust in me, I will never let that go. I'm going to come back soon with something really good, and just thank you. Thank you so much. Thank you, Ritu, for taking out time and talking to us. Thank you. It was my pleasure. It was just completely my pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Take care and happy journey. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye. See you. Bye. Yes.